I fell in love. These relationships are for life. क्योंकि मैं करण कुंद्रा हूँ and ये मेरे लिए बकवास है. Oh my god! Wow, super. Hey guys, this is Manjari Mukherjee and you're watching me on Pop Diaries channel, and I'm in conversation with the mastermind of BB15. Well, he's known for his current meeting. It's none other than Karan Kundrra. Hi, Karan. Hi. Well, I can see your best frame right now. I can see that you're very, very happy. I am extremely happy, yes. Yes, I can see for obvious reasons. Okay. We're going to talk about those reasons, obviously. But before everything else, people are going to ask you, kaisa laga? Did you expect to reach the finale and etc. But I'm going to ask you because I thought you were the winner. Okay. I was looking at the winner when you entered the show. So I'm going to ask you, looking back, do you expect or had you expected throughout the season, once you were getting so much of reviews and etc., कैसा expectation था? And starting में people were saying that we have already found a winner. So कहीं ना कहीं वो चीज था कि finale तक तो definitely जाएंगे, runner up तो definitely बनेंगे. But you were not the first runner up. Did you have an expectation you will be the first runner up? यार मेरी डिक्शनरी में ना ये रनर अप होता नहीं है. ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन अ विनर थ्रू आउट माय लाइफ एंड मैं इस शो में इसलिए नहीं एंटर हुआ था कि मैं ये शो जीतूंगा. आई वाज इन द 13th ईयर ऑफ माय करियर. मैं इस शो से बनने नहीं आया था. एक शो 13th ईयर में मुझे नहीं डिफाइन करने वाला, मेरी जर्नी को नहीं डिफाइन करने वाला. मैं बहुत चिल आया था, सोचा था 4-5 हफ्ते में निकल जाएंगे, जो भी होगा देखी जाएगी, ऐसा होगा. फिर फारा मैम आई, उन्होंने बोला, आई वाज प्रीटी शॉक्ड. आई इनको मैं अच्छा लगा, अच्छा वेरी नाइस. 5 हफ्ते निकल गए, 6 निकल गए, 10 निकल गए. सलमान भाई ने बोला विनर है, सबने बोला विनर है, तो एक होप जागी थी. Obviously, and then reaching the finale, getting there. But that doesn't define who I am. That doesn't define my journey. What's happening outside now is actually a better, benchmark of probably what I must have done inside. So and मेरी एक चीज है ना कि मैं मुड़ के नहीं देखता हूँ चीजों को. I don't look back and I don't dwell in the past. I always think about my future and what is right for me. I have gained immense amount of popularity through the show. Kindness that has flown in through social media, through people on the streets, through people who don't use social media. It is extremely overwhelming. What we had thought कि हम ये achieve करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, support मिली है, and that is more important for me, and अब बस आगे बढ़ना है, आगे देखना है. And I'm not going to disappoint people here. But somewhere in between your journey after the second week, we saw less of Karan, the Karan that we were seeing from the very first episode, from the very first time that you started off. We were seeing more of someone who is, Tejasswi Prakash's friend, Tejasswi Prakash's boyfriend, protector, his supporter, her supporter. So what was that all about? Because we saw less and less of you. Again, you jumped back, obviously, in the past few weeks, last few weeks, you jumped back with a bang. But somewhere we thought that you were lost. So what was it all about? I fell in love. And मैं अगर मेरे को प्यार हो गया तो मैं ये थोड़ी देखूंगा मैं रियलिटी शो पे हूँ या मैं घर पे हूँ. भैया प्यार हो गया करो, अभी ठोक के करो. So I live life this way. If I want to do something, I'm going to do that. And I knew I was focused. In fact, a lot of people in the show also told me कि तेरा focus नहीं है, कभी भी हिलता नहीं है. But अब मुझे प्यार हो गया है और मुझे वो करना है, तो मैं वही करूंगा. जब मुझे टास्क करना होगा मैं टास्क करूंगा. जब मुझे अपने लिए टेंशन लेनी होगी मैं तब अपनी टेंशन लूंगा. मैं करण कुंद्रा टेंशन नहीं लेता. मुझे जो करना था मैंने वो किया है. मुझे टास्क रद्द कराने थे, मैं टास्क रद्द कराता था. मुझे प्यार करना था, मैं प्यार करता था. मुझे दोस्तियां निभानी होती थी, मैं दोस्तियां निभाता था. मैंने अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से जो करना था मैंने किया है. अगर मैंने किसी को बैक स्टैब नहीं किया है
गेम में आगे बढ़ने के लिए, then that is me. अगर मैंने किसी को सपोर्ट किया है, that is me. I'm not gonna worry about anything when I want to do something. When I want to do something, I want to do something. तो जो भी किया वो अच्छा ही किया, तभी तो यहाँ मेरे को इतना प्यार मिल रहा है. So I'm very proud. क्या Absolutely. ठोक के प्यार किया मैंने. I like it. Okay. You used to lose your calm. You were seen losing your calm only when it came to Pratik. Okay. Why so? I mean, why only Pratik? Was it because the provocation was too much for you to handle inside the show, or was it because he was someone very close to you, and maybe Of that psyche, kind of Of strike you? course, the first time also when I lost my cool on him, I was like, because he affects me. अभी ये कोई random आदमी चल के कुछ कर रहा है तो मुझे affect ही नहीं होगा ना. I was like, भाई तू कौन? Pratik and me we shared a very beautiful relationship, and Salman Bhai said you've been very tough on him. I said yes, I've been very tough on him because that's good for him, and my dad's been tough on me. He's still tough on me. But I've lost my cool like the Afsana. Afsana, I made her my sister, so I used to lose my cool on her also. जब भी वो गलत करती थी, कितना जीतता था मैं उसके ऊपर. I've lost my cool on Tejaswi so much because these are my loved ones. And for the other people that I don't care, like a Bichukli, I don't care about. Why will I lose my cool on her? So the people that I care for, the people that affect me, bring that the losing cool wala situation. Otherwise, I wouldn't waste my energy on people that I don't care about. So now that you're out of the show, will you be meeting him, reconnecting with him again, and making the bond stronger, which was already there? With Pratik? Yes. Oh, definitely. See, for me, Pratik will. It's not for Love School or or Bigg Boss. It's a thing for life. In fact, I told him that I'm just a phone call away. Anything that is bothering you, any decision you want to take, anything, any help you need, inshallah, I'm sure you'll never need it. फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, घर करना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तू मेरे को फोन कर. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड अभी हम सब बहुत बिजी हैं. इन अ फ्यू डेज वी आर ऑल गोना गेट टुगेदर प्रोबब्ली एट माय हाउस. And these relationships are for life. Absolutely. Given the start of your equation with Tejasswi, a lot has been said to you during the weekend ka war. This is looking very toxic. You're doing that wrong. You're not taking a strong stand for your friends. You're not taking a strong stand for Tejasswi. What do you have to say about all those accusations? Because they amount a lot, on a person's character and personality outside. Fans were literally very disheartened to see you getting bashed again and again in the weekend cover. देखो, What do you have to to be say? very honest, how does it even matter? When I was जब मुझे गालियां पड़ती थी, तो तेजस्वी मेरे साथ खड़ी होती थी, उमर मेरे साथ खड़ा होता था, निशांत मुझे आके बोलता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है. शमिता यूज्ड टू स्टैंड विद मी. प्रतीक भी अपनी तरीके से आके कुछ ना कुछ बोल ही देता था कि भाई ऐसा है नहीं. तो आई रियलाइज कि अगर कंटेस्टेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे राइवल्स मुझे आके वो सेम चीज बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके लिए बोला जा रहा है वो खुद खड़ी होके बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है एंड आई कांट डू विदाउट यू, तो ऑब्वियसली बाहर लोगों को भी ये दिख रहा होगा. तो इट वाज प्रीटी मच अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी. आई नो हु आई एम. मैं ये भिंडी भिंडी के मुद्दे में मैं खड़े होके नहीं चीखने वाला क्योंकि मैं करण कुंद्रा हूँ एंड ये मेरे लिए बकवास है. ठीक है. बटर किसने खाया पे मैं अगर लड़ना शुरू कर दूंगा तो भाई मेरी क्या इज्जत रह जाएगी. एंड इज्जत की भी ना टेंशन लूं. भैया मैं बटर के ऊपर नहीं लड़ने वाला. आप पागल हो. आई वॉज नेवर इनसिक्योर ऑन दिस शो कि मुझे दिखना है, मुझे दिखना है. ठीक है. मुझे नहीं कभी भी ये टेंशन नहीं. जब मैं आया ही इस माइंडसेट के साथ था कि यार 4-5 हफ्ते चिल करेंगे निकल जाएंगे. ठीक है. तो वो तो हो गया. So what people think taking stands is very different from what I think. I use my brain. I have made sure कि मैं और मेरे loved ones आगे जाएं. They have made sure that हम लोग एक साथ रहें. I have understood people's personalities and how to get through to them. You know,
it is a relationship game, correct? It's a show about relationships. Tell me one contestant who's going to say anything bad about me. Tell me one contestant whose life I've not affected. Okay, tell me who have I not entertained on the show. नहीं लड़ना मेरे को फालतू के मुद्दों में, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना जा रहा हूँ. मेरी स्ट्रैटेजीज होती थी, मुझे प्लानिंग करनी आती थी, मेरे मेरे मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, एंड मैं उस हिसाब से टास्क करता था. मैंने टास्क रद्द करवाए हैं एक प्लान करके, सोच के कि ये मेरे मेरे फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है. इफ यू सीन द शो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग. इसीलिए मुझे गालियां Yes. पड़ती थी कि तुमने शमिता निशांत और प्रतीक को आगे नहीं आने दिया, अब तो अगर तुम आने दोगे तो कुछ हो जाएगा. तो वो किसके लिए मैं स्टैंड ले रहा था, यू नो. हाँ, भिंडी पे नहीं लड़ूंगा, भाड़ में जाओ, ठीक है, मुझे नहीं लड़ना है. मेरे को Okay. ये बकवासबाजी नहीं आती, मुझे नहीं दिखना है, ठीक है. और बाहर आके पता लग गया मैं कितना दिखाऊं कितना नहीं दिखाऊं बिना ये फुद्दू चीजें किए. सो आई एम ओके. Okay. I guess that's a very swag and dope answer coming from Karan Kundrra as usual. Okay. Considering some situations, okay, this is something that I personally want to ask because it left me quite confused. At times, we saw you taking a lot of selective stands. जैसे when it came to something like when कोई और कुछ बोले, जैसे तेजा को जब किसी ने stupid बोला, प्रतीक ने जब stupid बोला, तो you went ahead and took a stand for her. You took a very strong stand at that time. With the same thing, when Teja did the same mistake of, in the last task, in the final task, when even if it's in fun, when she pulled Shamita and when she age shamed her and she used that phrase, which can kind of, insinuates a character assassination on a person who's elder to you, who's senior to you in the industry. Um, Somehow it wasn't taken that nicely by the big boss audiences. And it left Yeah. me also confused because you were always taking a stand for the respect of women inside the show. Do So you why think select a do you stand? think do you think a Pratik reacts in the same way that a Shamita does? No. Pratik Obviously not. प्रतीक को प्रतीक की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है और शमिता को शमिता की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है. मैं प्रतीक को 10 दिन से बोल रहा था डोंट यूज सच वर्ड्स, मत कर. प्रतीक लैंग्वेज टास्क के बीच में भी मैंने जब उसको ऐसा एग्जांपल दी के समझाया, उसके बाद कभी जिंदगी में वो ही डिडंट डू इट, ठीक है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग प्रतीक फॉर इट. मैं ये तरीका आप शमिता पे अपनाऊंगा तो उसको समझ में आएगा. Do you realize that Tejaswi was standing outside Shamita's bathroom for 20 minutes crying and apologizing to her for, I don't know Yeah, if the air obviously we or saw that not? part as well. Yes. Correct. How did that happen? Okay. Who explained to her? When she's in the right space of mind, देखो अभी तेजस्वी गुस्से में है, मैं उसको जाके बोलूंगा हमारी लड़ाई हो जाएगी, उसका कुछ नहीं होने वाला. जब वो खुद रियलाइजेशन वाले पार्ट में आ जाएगी, जब वहां पर जाके मैं उसको प्यार से समझाऊंगा कि तेजा ऐसे नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं, तुझसे गलती हो गई है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि तूने एज शेम नहीं किया है उसको, तूने अपने उसमें बोल दिया है मस्ती में या जो भी है, बट दिस हैज टू गो अक्रॉस, नॉट इन लाइक मैंने नहीं किया, आई एम सॉरी, ये वो तूने भी तो ये किया. दिस राइट नाउ इज व्हाट शमिता नीड्स टू सी, राइट. तो मैं वहीं बैठा हुआ था जब वो वहां पर बाहर खड़ी थी, मैं उसको इशारे कर रहा था कि जा बोल दे शमिता है, मान जाएगी, आई नो शमिता, ठीक है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड रिएक्टिंग टू थिंग्स. मेरी गलती नहीं है कि मुझे लोग समझ में आते हैं, मेरी गलती नहीं है कि मुझे लोगों के टेम्परमेंट समझ में आते हैं, मेरी गलती नहीं है कि मैं लोगों को इमोशनली संभाल लेता हूँ, ठीक है. तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं भै 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 करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शो में ये सब चलता है. आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, ठीक है. हर सिचुएशन को, हर इंसान को, एक उमर कैसे रिएक्ट करता है इज वेरी डिफरेंट देन हाउ तेजस्वी वुड रिएक्ट. Shamita will react in a very different way from a Nishant. Pratik will react in a very different way than me. I understand these things and I tackle them in that way. ठीक है. तो मतलब अब ये सारी चीजें, when have I not taken a stand for women in my life? हाँ, कभी भी. जब वो बिचुकले वाला पंगा हुआ था तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरे को जहर दिख रही थी, ये अपनी देवलीना. पर सबसे खतरनाक खड़े होके स्टैंड मैंने लिया था, ठीक है. और मैंने बोला था कि ये नहीं गलत, ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तो ये मतलब मैंने अंदर गेम खेलने नहीं गया था,
ठीक है, मैं यही हूँ, ये अंदर बाहर सब जगह है, ठीक है। सो दे इट्स अ शो ऑफ टॉकिंग एंड इट्स अ शो ऑफ शोइंग दीज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि ऐसे करने से होता है। इट्स नॉट ट्रू, यू कैन ऑल्सो बी अ सेंसिबल पर्सन इनसाइड। Okay. Uh, Coming back to Umar, your absolute loyalist friend. Okay, he was supporting you outside as well. Oh my god! Wow, super. Have you met him already? Because मेरा उसका have फुल you talked? फुल हिट एंड मिस चल रहा है। अगर मैं उसको 1 बजे मैसेज करता हूँ तो उसका 3 बजे आता है। मैं उसको बोलता हूँ कि 1 बजे तक अरे, फ्री हूँ तो उसका 1 बज के 7 मिनट में मैसेज आता है। सो अभी भी उसका वो आया हुआ है, तेरा फोन क्यों ऑफ है? सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच, वी आर टॉकिंग, वी आर मैसेजिंग, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। ऑल दोस फनी थिंग्स दैट वी डू विद ईच अदर वो हम फोन पे कर रहे हैं, बट मिला नहीं हूँ एंड आई एम डाइंग टू मीट हिम। बट आई थिंक दैट्स गोना हैपन इन अ फ्यू आवर्स, यस। uh, basically, what I wanted to ask you was, uh, while Umar was, when he was evicted, did you, in a way, there was a very big, backlash towards the makers and everyone from the audience outside, if you've come out and seen already. So, do you feel that somewhere it was very unfair on Umar to get out of the show at that moment when he had a lot of potential to win the show? Uh, for Umar as a person, for Umar as a contestant, for Umar as the strong boy that he came across, considering his journey, his, graph, Yes, it was extremely, extremely wrong. Unfair is up to the people who voted for him. As his best friend and as his brother on the show, I was extremely, extremely upset and sad and angry, and all sorts of emotions, right? मेरे हाथ में होता तो वो कभी भी बाहर नहीं जाता, बट वो मेरे हाथ में नहीं था। absolutely. वो ऑडियंस के हाथ में था, वोटिंग के हाथ में था। What happened over there? I don't know. But one of the strongest contestants got out, unfortunately, ऐसे टाइम पे जहां पर वो पीक पे था और आगे पीक करने वाला था। It was going to be me and him and Tejaswi. We were the strongest. जो हमारा कॉम्बिनेशन था, स्पेशली मेरा और उमर का, जो ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट वाली जो कॉम्बिनेशन थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो एग्रेशन था, जो मैं वो एग्रेसिव तो मैं शांत, मैं एग्रेसिव एग्रेसिव तो वो शांत, जो एक दूसरे की प्रोटेक्ट करने वाला जो नेचुरल नेचर था। हम छोड़ते बिग बॉस को, हम खड़का देते बिग बॉस को, इट वुड बीन Obviously. हम तो व्हाट वर वी डूइंग, वी वर नॉट लेटिंग पीपल कम अहेड इन द गेम, कि हमें बोलना पड़ा, अरे भाई दूसरों के लिए भी कुछ सोचो, ठीक है। सो यू नो आई बिलीव्ड दैट हाफ माय स्ट्रेंथ वेंट अवे दैट नाइट। Okay, okay. Thank you, Karan. Thank you so much for being so honest, candid, and just you. Okay. And we love you as you are. And welcome back into the real world from Big Boss 15 world. Yeah. Hope to see you again in many projects, and maybe even in Naagin. ओके, लेट आई एक्चुअली आई वुडंट माइंड। अब जितना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ना तेजस्वी के साथ, मैं उसका हीरो बनने Oh, के लिए तैयार। लेट इट गो आउट इन दी ओपन कि सिम्बा तो अच्छा है, सिम्बा मेरा छोटा भाई है, बट प्लीज मुझे कुछ ऐसे सेटअप दो कि मैं 24 घंटे उसके साथ रह पाऊँ और वो मेरे साथ रह पाए। नहीं हो पाता। okay, okay. And I hope the wedding bells, ring very soon for TejRan. मनाओ। Okay. Okay, that would be all. Thank you so much, Karan. थैंक यू मंजरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।